Hello, good morning. Good Am morning. I audible? Good morning. Yes. Hello. Good morning, everyone. Yeah, good morning. We will wait few Morning. all the participants join. Okay. Hello, we will wait few more minutes to let everyone join.
Audio only mode.
Hello. Very good morning to all of you. We'll still need to wait 2 more minutes. Sir, IPMS is you, sir. Pankaj Borkar, sir. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible. We will wait few minutes to let all participants join.
Hello. Yes. અચાનક ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. Ranjan ma'am, હા હા you are meeting connected. You are connected only. There is no any issue. આઈફોન નું જોડ લે આઈફોન જોડ લે નીચે હા એ થઈ જશે પણ કનેક્ટ થઈ જાય છે ને કેમ આવતું નથી. Ma'am, your voice is coming only. રામકૃષ્ણ આશ્રમ થી છે ને જગદીશ મહારાજ નો ફોન આવી ગયો છે. રામકૃષ્ણ આશ્રમ Hello everyone. Very good morning to all present here. I, Anjali Rathod, on behalf of SUSET Saurashtra University, welcomes you all. Yes, continue. Now we will start the session. We, on behalf of SUSET and IIC Saurashtra University, welcomes you all for today's lecture on intellectual property rights and IP management for startups. Under National Intellectual Property Awareness Mission, we, in collaborative with RGNIIPM, organized the session on intellectual property rights and IP management for startups. Today, our eminent speaker is Mr. Pankaj P. Borkar. He is currently working as a Deputy Controller of Patent and Design IPO Mumbai, RGNIIPM Nagpur. Now, I would like to invite to Dr. Arshik Khod, President IAC, to give a brief about IAC and Incubation Center. Thank you, Anjali. Good morning, all of you.
Due to his Good morning, ma'am. big, You are due to- audible. Good morning. Yes. Due to busy schedule, our Honorable Vice Chancellor Professor Girish Bhai Bhimani sir is not able to join the meeting, but he's blessing with us to success these events. So on behalf of that, I welcome you all on this session. Our today's speaker, Mr. Pankaj Borkar sir, Deputy Controller of Patent and Design Patent Office at Mumbai from Rajiv Gandhi National Institute of IP Management, Nagpur. Mr. Parth Sespal, faculties from Parth Sespal, CEO of the SUSEC, faculties from the different institute, and beloved futurist entrepreneurs and beloved students. As we know that university is dedicated to the university is dedicated to instruction, research, and extended knowledge to the public. Ministry of Education of India has established the Ministry of Education's Innovation Cell to systematically foster the culture of innovation among all higher education institutions. The primary mandate of MIC is to encourage, inspire, and nurture the young students by supporting them to work with the new ideas and transport them into prototypes while they are informative years. Means in a student life, when they are working that fact in a youth set like that things. Saurashtra University is one of the organizations that have constituted to Institute Innovation Cell to foster the vision of Ministry of Education and be a part of the promotion and development of the innovation ecosystems. The university has a policy to carry out its scholarly work in an open and free atmosphere and to publish the result obtained therefrom freely. Research done primarily in anticipation of profit is incompatible with the aim of university. The university recognizes, however, that patentable innovations sometimes arise in the course of research conducted by employees and students using university facilities. So the authority of university has determined the patenting and licensing of innovation resulting from the work of university personnel, including the students, is consistent with the purpose and mission of the university. So as a part of IIC and the nation, today we have organized the events as the calendar events of IIC or MIC. Now, today's speakers with us, and that is Mr. Pankaj Borkar from the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Rights and Management. The Pankaj Borkar is working for more than 19 years in central government office under the Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, and presently working as a Deputy Controller of Patent and Design. He is a group leader of a Mumbai Mechanical Group, and he is a dealing and deciding the national and international patent application of IPO Mumbai. He is also working as a team leader at Rajiv Gandhi National Institute of IP Management, Nagpur, which is only a central government national IPR training institute in India. He has done his PhD in intellectual property rights, postgraduates in patent laws, bachelor's of engineering and management. So he has published various national and international papers. He has delivered numbers of lectures of intellectual property rights in various parts of the country with various aspects. He was deputed by government twice for a training at Japan Patent Office, Japan on examination and intellectual property right issues. With this brief introduction, I would like to invite our today's speaker, Pankaj Borkar sir, welcome on behalf of this Saurashtra University and Saurashtra University SUSEC of this. I would like to request all the participants, please join us for the full events and take the maximum advantage of these today's speakers. Thank you all. So very good morning to all of you. My voice is audible? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So very good morning to all respected faculties, all the students. Today we will discuss about the intellectual property rights and how to file a patent application and how to file a design application. It's very interesting topics and definitely you can take the advantage. And at the last, I will share one of the important document. We have written around 28-page document. Okay. So in that entire procedure is given, like a patent filing, design filing, copyright filing, etc. So I will share with all of you
but after the presentation is over. So before that, I will share my PPT and please see whether it is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. So we will discuss about the patent filing and designs filing. Okay. So before that, I will just give the students about the brief aspects about its intellectual property. Please understand, you can make your career options are also in this IPR. Okay. There is a huge field actually. If you are the science graduate, if you are the law graduate, you can make your careers in this field. And definitely university can have a patent design filing or copyright filing. There should be IP policy in university and IP cell. So who can actively impart various kinds of suppose there is some agreement between the applicants and university. So how much percentage will be given to the university? How much percentage will be given to the applicant? That can be written in your IP policy. This is our office structure. Our office is under the Ministry of Commerce and Industry, DPIIT. Under that, we have Office of Control General of Patent Design Trademarks. So we have different wings. You can see here, patent wing, trademark, design, geographical indication. So we have, like patent office, 4 offices are there. So you want to file a patent application, you can file to respective jurisdiction as per the applicant. Like Western Zone, if your applicant is from Western Zone, you can file to Mumbai office. Similarly, if you are from North Zone, you can do Delhi. Similarly, South, you can file to Chennai, and East, you can file to Kolkata. Trademark office we have at 5 places. So Ahmedabad, one more place is there. You can file a trademark application. Design, you can file to Delhi office. Kolkata office directly. Otherwise, you can file to Mumbai also, Kolkata also, Chennai also, as per your jurisdiction. But if it is better to file in Kolkata. Geographical indication, you can file to Chennai. Copyright, you can only file at Delhi. Semiconductor, you can file at Delhi. And Nagpur is our training academy. These are our offices, you can see here. And this is our international applications we can process here. This is our Nagpur office. If you are interested to get trainings or detailed training, next week we are conducting a very big training, international kind of training, WIPO India training program, 2 weeks. So you can join our online 2 weeks training program. This is our social media, RGNIIPM, about Twitter, and you will get various notifications. And this is our website, ipindia.gov.in. You can see the first page of this website, ipindia.gov.in. I think you know that this website and lot of information is available in this website. You can see here e-filing of application, comprehensive filing, journals are available. See, patent journals. So if you are interested to read new inventions, if you are interested to read the new designs, so we are publishing all these in our patent office journals or design journals or trademark journals. So it is very, very interesting to know all these journals. And if you want to get details, you can file, you can see that application number and you can put in application status here, public search. You will get entire details. I will show you that. These are act and rules, manuals are available. Copyright you can file from here and SICLD from here. Online program, as I told you, we are starting online program next week. It is a international programs, so where foreigners are also there. So if you are interested, registrations are going on. You can go and visit. So e-filing is there. So you can file everything online. Public search, as I told you, expired patents are there. So you can visit all this. And from this application status, you can get here details about any kind of patent specification. See that complete specification, drawings, abstract. So for one patent, you can get entire details. Like this application has been filed in 12/4/2022. I think it is published. So which is already in published domain. So what document they have filed? So you will get entire information in this website. So this is about the one application. From this, you can get a number of applications and their details. Some of the important announcement to you
that we are giving 80% fee concession for institute. I think anybody knows this. Anyone can tell me, anyone? So we are now granting 80% fee concession for institute filing, examination, etc. Can anyone can tell me? Whether you knows this? These are the government achievements. My voice is audible? Yes, sir, it is audible. Yes. So whether you know that, madam, anybody, that we are already giving concession for filing to 80% concession for institute, that we know, sir, because we are already filing 2 patents on behalf of Saurashtra University. Okay. So I think you must know that. So now recently we change our rules and now there is a 80% fee concession for institutes. Okay, please inform to all that Sure, sir. earlier the exam fees for filing is 8,000. Yes, Now filing fees only 1,600. 1600. Yes, sir. Yes. Earlier examination fees was 20,000. Now it was turned down to only 4,000. So it was a very big announcement. I just want to tell you, and so that you can file more and more patent application. That is the very that is the purpose of this system. That people Yes. are institute are not filing so many patent application. So we government has decided to reduce the fees for institute. And there Sure, is sir. ladies can file expedited examination, tatkal examination, they can file. So if one of the applicant is ladies, okay, all are individual and one of the applicant is ladies, so you can get early patent also. Within 1 year, patent can be disposed. Many people will say you that patent will take a lot of time, but it is not like that. If you file tatkal examination, tatkal publication, and if one of the applicant is ladies, in less fees, you can get the examination reports. So everything is online. If you file online, there is a 10% fee concession. If you withdraw your application before examination starts, your examination fees will be refunded. These are some achievements by our office, which I just want to share with all of you. What the government is doing, but the filing trend is very slow. That I just want to tell you. If we see the examination and disposal is increasing, but see, if you can see here, filing is not increasing. If we see the China filing 14 lakhs, Indian filing is only 66,000. So this year it was 66,000. So it was very, very less if you compare to very developed countries. So we are mostly focused on publication. So that is the concern actually. If we see the other countries, their national people are filing more patents. Indian people are filing less patent than foreigners. Foreigners are filing more patents than Indian people. In India also. So we have to start actually thinking differently. Even in design also, very few share compared to our population. Very few people are filing in design also. So 8 lakh filing in China, design filing is only 22,000 in India. So again, it is a very great concern. So coming to intellectual property. Now you must know the property. Okay, properties are divided into tangible and intangible property. Tangible means आप उसको मेजर कर सकते हो. You can measure that property. जैसे आपके पास घर है, लैंड है, ठीक है ना? तो ये अगर आपके पास मोबाइल भी है, this is your property. Okay, so that property you can measure. But this property, like intellectual property, you cannot measure. Why? For example, if you written any book, or if you have a very good composition of music, so whether you can calculate the amount you will get, how much books will be sold in market, whether it is any guess is there? No. So you cannot guess how much exact valuation it will be given. One invention can give 1 crore or 1,000 crore rupees also. One book, it can be sell thousands of copies. So it is, that's why it is an intangible property. You cannot give exact valuation.
It cannot be measurable. So basically, intellectual property is nothing but any ideas, any expressions from human mind can be the intellectual property. Suppose any inventions are coming from your mind, okay, from any your human mind. आपके माइंड से अगर कोई नया इन्वेंशन निकल रहा है, अगर कोई नया डिजाइन आ रहा है आपके पास, या कोई नया लोगो आ रहा है, या कोई एक गाना आ रहा है, if you written any book also, all these your property. This is your property. That's why it is creation of human mind. So any creation can be protected via intellectual property. Why it is important? सबसे पहले तो है कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च रोकने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पब्लिश पेटेंट्स आर देयर, हमारे वेबसाइट में भी है, गूगल पेटेंट में भी है। These are available information, you can see expired patents भी है, so you can explore these and use that for project work. उससे डुप्लीकेशन कम हो जाए। अगर वही वही प्रोजेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है तो फायदा नहीं। तो इंडिकेटर फॉर अचीवमेंट, अभी बहुत लोग पूछते हैं कि पेटेंट्स कितने हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर जगह पे, प्राइवेट में भी। इट प्रोवाइड्स द रिवार्ड एज एक्सक्लूसिव राइट, so you are the owner of the property. You can earn profit, royalty, commercially exploiting without copying, imitation. कॉम्पिटिटर को प्रिवेंट कर सकते हो, एक्सपांडिंग द मार्केट शेयर, न्यू मार्केट्स हो सकते हैं, आपकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है, आपका बायोडाटा में भी बहुत इजाफा हो सकता है। अगर आपके पास पेटेंट्स है, आपने सुना होगा कि अगर पेटेंट डिजाइन से अगर बायोडाटा में, तो यू विल बी बिग डिफरेंट। आप वो भीड़ से बाजू हो जाते हो, अलग दिखने लगते हो, तो आपकी मार्केट वैल्यू, यू आर मोर एम्प्लॉयबल। Due to IPR, you are getting new technologies. All these latest technologies are you are getting only due to IPR, as it encourages to more improvement of technology. This is the difference between all these patent, design, trademark, copyright. So basically, intellectual property contains patent, design, trademark, copyrights, integrated circuit, GI. All these are the parts of intellectual property rights. So what is difference between patent and design? Mostly, as mostly discussing the patent and design or copyright. So what is the difference? 1 minute, just. Sorry, hello. My voice is audible? Yes, sir. Yes. Sorry for interruption. Some important call is there. So what is the difference between patent and design? Patent is basically for inventions. See, if you have a very good invention for any product or process, so if you develop a new product or new process or any improvement in process or any improvement in product, you can file a patent application. For example, I am giving example here also. जैसा आपने यहाँ पे दिख रहा है, मशीन है,
यहाँ पे दिख रहा है गैस फिलिंग मशीन, गैस का प्रेशर मेजरमेंट मशीन है। अगर आपने कोई नया इन्वेंशन बनाया है इसमें, तो आप इसको पेटेंट ले सकते हो। जैसा अभी यहाँ पे गेज डिवाइस है ये, हाउ मच प्रेशर इज अवेलेबल इन दिस गैस, यू कैन मेजर दिस प्रेशर। नॉर्मल सिलेंडर में भी ये मशीन लगा सकते हो। अगर ऐसा मशीन किसी ने बनाया है तो इट इज अ न्यू इन्वेंशन। सो कोई भी आपने प्रॉब्लम ढूंढ के निकाला, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी अगर आपने बनाया, कोई भी, अगर कोई भी प्रोडक्ट में अगर आपको दिख रहा है कि ये डिफिकल्टी है और आपको उसको इंप्रूव कर रहे हो, या कोई प्रोसेस में भी आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट करना जरूरी है और आप इंप्रूव कर रहे हो, तो यू कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। सो कोई भी छोटा छोटा इंप्रूवमेंट्स भी आप उसको पेटेंट ले सकते हो, प्रोसेस में या प्रोडक्ट में होना चाहिए या डिवाइस में होना चाहिए, प्रोवाइडेड वो नया होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो यू विल गेट पेटेंट फॉर 20 years। नाउ व्हाट इज डिजाइन? अभी डिजाइन मतलब कोई भी आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा अभी फैन का आप देख रहे हो, नया डिजाइन होता है, बहुत बार अलग अलग डिजाइनर फैंस होते हैं। अभी कार में भी बहुत सारे डिजाइनर कार्स आ रही है, उसका हेडलाइट टेड लाइट, या मोबाइल में भी देखेंगे रोज नए मोबाइल्स आ रहे हैं विद न्यू अट्रैक्टिव डिजाइन। तो अगर ये मोबाइल या कीबोर्ड है, अभी कीबोर्ड का भी आपने नया डिजाइन बना दिया, डिजाइन मतलब आपने नया लुक चेंज किया, हो आउटर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, या आपने माउस का भी नया माउस बना दिया, या टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है मेरे सामने, ये भी आपने कोई अट्रैक्टिव डिजाइन बनाया, तो आप वो डिजाइन प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ड्राइंग देना है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा आगे में कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डिजाइन फाइल करना बहुत इजी है। तो जैसा अब ये मोबाइल में दिख रहा है, सेल्फी कैमरा है, डायमंड शेप डिजाइन है, ये आप फाइल कर सकते। नाउ व्हाट इज द ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज फॉर लोगो, लाइक अ ब्रांड नेम, सिंबल, बिस्लेरी, टाटा, दीज आर द लोगोज कैन बी ट्रेड। कॉपीराइट क्या हो सकता है? ड्रामा, सॉन्ग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क, प्लान्स, अगर आपने कोई बुक लिखा है वो भी कॉपीराइट हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स है, वो भी हो सकते हैं। कोई मूवीज है, वो भी कॉपीराइट, आपने सुना हो कॉपीराइटेड। तो दिस कैन बी कॉपीराइटेड, यू कैन गेट अप टू 6 years। जीआई आर द प्लेस नेम्स। सो आपको 10 साल मिलता है ये सब, और एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक प्रोडक्ट के अंदर में बहुत सारे आईपीआर भी हो सकते हैं। आप देखेंगे फोल्डेबल मोबाइल लिख रहा है, तो इसका पेटेंट भी हो सकता है। फोल्डेबल स्क्रीन है, और इसमें बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं मोबाइल में भी। रोज नए पेटेंट आते हैं इसमें, हजारों। जैसा अभी नया इन्वेंशन है बैटरी, फास्ट चार्जिंग बैटरी, वायरलेस चार्जर, ठीक है? ऐसे बहुत सारे नए नए इन्वेंशन आते हैं, वो आप पेटेंट ले सकते हो। ट्रेडमार्क मतलब जैसा सैमसंग, एप्पल है, ट्रेडमार्क हो सकता है। डिजाइन मतलब ये फोल्डेबल, किसी ने सोचा होगा कि फर्स्ट टाइम कि मोबाइल भी फोल्डेबल हो सकता है, तो उसका ड्राइंग निकाल के भेज दिया, ये प्रोटेक्शन हो गया। डिजाइन बहुत इजी है, सिर्फ ड्राइंग निकाल के भेजना है। कॉपीराइट क्या हो सकता है? when you are purchasing some mobile, you will get some booklet how to use this mobile, it can be protected by copyright, that booklet। तो मैं बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी पेटेंटेबल हो सकते हैं। जैसा ये गूगल पेटेंट में जाइए, बॉल पॉइंट पेन डालिए, आपको हजारों पेटेंट मिलेंगे। गूगल पेटेंट में जाओ, पेपर क्लिप डालिए, हजारों पेटेंट है। यू कैन सी द रिजल्ट्स। पेपर क्लिप, छोटे से पेपर क्लिप के इतने सारे पेटेंट है, पेन के हजारों पेटेंट है, नीडल के आप देख सकते हो, नीडल हजारों पेटेंट। दैट मीन्स स्मॉल स्मॉल इन्वेंशंस कैन बी पेटेंटेड। तो मैं यही बताऊंगा जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए व्हेन यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट वर्क, सो दैट इट कैन डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर यू। तो मार्केट की जरूरत है, कंपनीज की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप डिवाइस करिए और उसको बेचिए मार्केट में, पेटेंट फाइल करिए, जिससे आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे डिजाइन है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिजाइन बहुत बढ़िया है। व्हाई नॉट वी कैन डेवलप सच काइंड ऑफ डिजाइन सो दैट ह्यूमन एफर्ट्स कैन बी रिड्यूस। जैसा ये कोई डिजाइन दिख रहा है आपको, पेटेंट भी होगा। जैसा इसमें कोई भी कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ सकता है, तो ये एक डिवाइस की वजह से इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। जस्ट इमेजिन, व्हाई नॉट वी कैन डेवलप। ये कार में आप देख सकते हो, नैनो कार में बहुत सारे पेटेंट और डिजाइन थे उन्होंने। व्हाई दे हैव डेवलप? क्योंकि उनको जरूरत थी कि 1 लाख के अंदर में कार बनाना है।
सो उसके वजह से इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए, डिजाइन बनाए, एक वाइपर लगाया, पीछे में इंजन शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पेट्रोल टैंक बीच में लाया, उसने बहुत सारा पैसा बचाया है इसमें। जो ग्लास फिट कर रहे हैं वो प्रेस फिटेड ग्लास है। छोटे छोटे इन्होंने इन्वेंशन किए हैं जिसकी वजह से वो अभी उनके वहां पे वो टेक्नोलॉजी रोज खुद ही लोग बदल रहे हैं। अभी वो स्टार्ट हो गए कि खुद ही वो डेवलप कर रहे हैं। ऐसा इनोवेशन कल्चर हमारे आपके यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले इन्वेंटर बनना पड़ेगा। अगर आपको पेटेंट डिजाइन फाइल करना है तो यू शुड बिकम फर्स्ट इन्वेंटर। तो इन्वेंटर का क्या काम रहता है जनरली? वो पहले हर बार प्रॉब्लम ढूंढता है, आजू बाजू में क्या प्रॉब्लम्स है, या मैं क्या चीज अच्छे से बना सकता हूँ, वेदर आई कैन सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस, वेदर आई कैन सिंप्लीफाई दिस डिवाइस। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा हर बार। और अगर आप प्रॉब्लम्स बहुत बार आपके पास होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर डिस्कसिंग, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप बात करते हो, बट ये प्रॉब्लम क्या है, आप रिकॉर्ड नहीं करते, कहीं लिख के रखते नहीं, उसको आगे नहीं लेके जाते। अगर ये हो गया तो यू कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन और डिजाइन्स। हम देखेंगे अभी डिजाइन कैसे फाइल होना है। आपको दिख रहा है टूथब्रश, ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, हैंड फॉसेट दिख रहा है, ऑल दीज आर डिजाइन्स, ठीक है। ये डिजाइनर कार दिख रही है आपको, पैटर्न्स दिख रहे हैं, हेडलाइट, टेल लाइट, अभी देख रहे हैं आपके नए नए टेल लाइट्स आ रहे हैं, डिजाइनर एलईडीज आ रहे हैं, सनरूफ है, मिरर का डिजाइन है, ये दिख रहा है हैंड वाला, रेल वाला, ऑल दीज आर डिजाइन प्रोटेक्शन। आपको शायद पता नहीं होगा, ऑल दिस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन राइट्स। छोटे छोटे इन्वेंशन का टायर्स भी डिजाइन प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा कि क्या नया हो सकता है। तो रोज नए डिजाइन आ सकते। तो बेसिकली डिजाइन है क्या? अगर आपने कोई पैटर्न बनाया, लाइंस, कंपोजिशन ऑफ लाइंस बनाई, ठीक है, आपने कोई शेप नया बनाया और वो फिनिश आर्टिकल के ऊपर लगा दिया, तो डिजाइन आप फाइल कर सकते, 15 साल के लिए डिजाइन हो सकता है। तो स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट्स कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर डिजाइन। इवन आपका जो टिफिन का बॉक्स है, वाटर बॉटल है, फैन है, फोटो फ्रेम, इवन आपके जो प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स भी दिख रहे हैं ना, जो आजकल के नल आते हैं, न्यू काइंड ऑफ टैप्स आर कमिंग, ये सब डिजाइन प्रोटेक्टेड है, आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिजाइनर फैंस। डिजाइन फैन अभी देखेंगे तो आपको 8,000 का मिलेगा, सिंपल वाला फैन आपको 2,000 में मिल जाएगा। व्हाई इट इज कॉस्टली? इट वाज प्रोटेक्टेड अंडर डिजाइन राइट्स, दैट्स व्हाई। तो सब चीज डिजाइन प्रोटेक्शन हो सकती है, इवन बिस्कुट आल्सो, दिस कप आल्सो, डिजाइनर ड्रेसेस, डिजाइनर साड़ीज, साड़ीज देखी होंगी आपने, डिजाइनर साड़ीज 1 लाख से 10 लाख तक साड़ीज आती है। ये सब चीजें आप डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड थे जो अभी एक्सपायर्ड हो गया है। तो ये सब कटलरीज है, ये सब चीजें आप डिजाइन ले सकते हो, ठीक है। डिजाइनर सोफा, डिजाइनर सीट्स, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डिजाइन फाइल करने के लिए चाहिए क्या? आपके पास आपके घर में मोस्टली वॉश बेसिन होगा जो कि ओवल शेप का होता है, ठीक है, ओवल शेप का वॉश बेसिन होता है, ठीक है। अभी आपने नया डिजाइनर वॉश बेसिन बनाया, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ न्यू काइंड ऑफ वॉश बेसिन यू हैव डेवलप। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको फाइलिंग करना है तो क्या रीजन है? तो सबसे पहले वो नया होना चाहिए। अगर आपने ये नया बेसिन बनाया है तो इट शुड बी न्यू, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन डिजाइन, नॉट कॉन्ट्ररी टू मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, थोड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, इट डज नॉट प्रेजुडिस टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस सिक्योरिटी में नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। दैट डिजाइन शुड बी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, अपीलेबल होना चाहिए, जज बाय आई होना चाहिए, एंड मोस्टली इट शुड बी अप्लाइड टू फिनिश आर्टिकल ओनली। अगर ये चीज अगर हो रही है तो यू कैन फाइल अ डिजाइन एप्लीकेशन, एंड नेम ऑफ द डिजाइन शुड बी कंसिस्टेंट विद द पिक्चर। ये अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन फाइल डिजाइन विद इन हाफ एन आवर। देयर आर 32 क्लासेस फॉर डिजाइंस लाइक दिस। ये 32 क्लासेस डिजाइन के होते हैं, आप वेबसाइट में देख सकते हो, हमारे डिजाइन वेबसाइट में। लाइक अगर आपने ब्रश बनाया तो 4 नंबर, मशीन्स बनाई तो 15 नंबर, इक्विपमेंट्स बनाया तो आपका 13 नंबर, ऐसा
मेडिकल है, इक्विपमेंट है 24, तो आपको क्लास बताना पड़ेगा। हु कैन अप्लाई? तो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन कैन अप्लाई। आप खुद भी कर सकते हो, 4-5 लोग 10 लोग मिलके भी कर सकते हो एज ए नेचुरल पर्सन। तो आपका फीस कितना होगा फर्स्ट कैटेगरी के लिए? 1000 रुपए। सेकंड कैटेगरी का फीस कितना है? 4000। कहाँ फाइल करना है? कलकत्ता में डायरेक्ट। तो 1000 फीस, form 1 is required and this photos is required. So this form 1 is required and this photograph is required. बस आपका डिजाइन फाइलिंग हो गया। ओके, तो 1000 फीस आपको देना है, फॉर्म भरना है आपको 1, उसमें क्या डालना है? नाम, एड्रेस, क्लास नंबर, एड्रेस, नेम ऑफ द आर्टिकल, इतना ही। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन? यू हैव टू गिव ओनली फोटोग्राफ्स और वेरियस व्यूज ऑफ द आर्टिकल, टॉप व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, कोई भी व्यूज आप दे सकते हो विद द स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी एंड डिस्क्लेमर। ये भी आपको जरूरत नहीं है देने की, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आपको सिर्फ डिजाइन फाइलिंग के लिए फॉर्म 1 लगेगा और ये ड्राइंग्स लगेंगी। इसमें आप शीट नंबर अलग अलग शीट लगा सकते हो। ड्राइंग्स प्लेन ड्राइंग चाहिए, ये जैसा पर्सपेक्टिव व्यू है जार का, आप साइड व्यू दे सकते हो, टॉप व्यू दे सकते हो। ठीक है, नाम डालिए, नॉवेल्टी एंड स्टेटमेंट, ये सिर्फ स्टैंडर्ड है, और सिग्नेचर। इतना करके आप फाइल कर दो, हो गया आपका। डिजाइन फाइलिंग इज वेरी वेरी इजी। कोई भी मशीन बनाई है आपने, नया डिजाइन है, आप फाइल कर दो। आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते। कॉपीराइट हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि पेटेंट ही लिख रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली कॉपीराइट इज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज कॉपिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क। कोई भी ऑथर के ओरिजिनल वर्क है, इसको रोकने के लिए, सो दैट अनऑथराइज डुप्लीकेशन कैन नॉट बी डन। तो वो राइट हैज बीन गिवन टू पर्टिकुलर ऑथर और कंपोजर so that he will only utilize his work. So there is no registrations are necessary, it is automatic basically. But अगर कोई आपका चोरी करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, that's why you have to register it. So it was denoted by symbol C. इसका फीस अगर आप देखेंगे तो 500, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फीस होता है। लिटरेसी ड्रामेटिक के लिए 500, आर्टिस्टिक 2000, अगर आपको ने बुक लिखा है तो 500 रुपये लगेगा। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफ वर्क 5000 रुपये, इस टाइप का होता है फीस। बेसिकली हम लोग अभी पेटेंट में देखेंगे। व्हाट इज पेटेंट? तो बेसिकली पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट। इट इज ए मोनोपोली राइट विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 20 years for commercial gain in consideration of disclosure of the invention. So patent is a right which is given for inventions. So this right has been given by a government to the applicant for 20 years. But you have to disclose your invention to the patent office. Please note, patent is a territorial right. It is not a worldwide right. Then patent only you will get for inventions only, not for discovery. Understand difference between discovery and patent. Patent will be given for inventions, not for discovery. Discovery means which is already existing, which is already known. So you cannot get patent right for discovery. Patent will be given only for inventions. And what is invention? So invention means any apparatus, any improvement in apparatus, any improvement in device, any improvement in process, provided it should be new, inventive, and industrial application. So what is new? New means it is not available in prior art. It does not known. It was not published before filing of patent. It does not contain, it should contain the inventive step. That is it should not be obvious to the person skilled in that. That means it is having some technical advancement or economic significance. For example, अगर आपने मोबाइल है, कैमरा, अगर 60 मेगापिक्सल कैमरा है, आपने 70-80 मेगापिक्सल कैमरा बनाया, it is not inventive. Yes, it is inventive. Some आपने economic significance बढ़ाया, technical advancement बढ़ाया, so you can say that it is an inventive. And industrial application means you can reproducible. So some important point before filing. So don't publish your invention in anywhere, in newspaper also.
Don't wait your invention to be fully developed. Model prototype is not required. Please understand. हम लोग आपको मॉडल एंड प्रोटोटाइप नहीं मांगते हैं. डिजाइन में आपको सिर्फ ड्राइंग फाइल करना है, पेटेंट में आपको सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल करना है. मॉडल इज नॉट रिक्वायर्ड. Don't share your invention with others. For one invention, you should file one patent application. Similarly, for one design, you can file one design application. Multiple cannot file in one patent application. There are some non-patentable inventions in India. You can see here, Section 3 and Section 4 of the Patent Act. We cannot grant patent on certain aspects. For example, अभी फ्रिवुलस इन्वेंशंस कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल. मैं इसका एग्जांपल दूंगा. दीज आर नॉन पेटेंटेबल. ओके, some examples are machine is giving 100% performance, a machine giving output without input. These are frivolous and against law. So you cannot get patent on them. Any invention against public order or morality, like method for adulteration of food, method for cloning of humans, so you cannot get patent on that. Mere discovery, मैंने बताया था discovery no patent. Mere admixture no patent. Method of agriculture no patent can be granted. Any method for surgical, curative, therapeutic on any treatment on human beings, no patent can be granted. लेकिन devices are patentable. See, method is not patentable, but devices can be patentable. Here also, method for is not patentable, but devices are patentable. Plant animal, no patent can be granted. Mathematical method, business method like algorithm, computer program, no patent. But computer program with some hardware is there. You can read the CRI guidelines, patent can be granted. Literacy, dramatic, method of playing game, all these are not granted patent. Traditional knowledge, no patent can be granted. So not patentable. All these are under Section 3 of the Patent Act. So we cannot grant patent on that. I am just giving overview. Even the atomic substances which are defined under the Atomic Energy Act. So these are the notified substances. We cannot grant patent on that. So we patent कैसे file करते हैं? So there are various applications you can file. Mostly you should choose ordinary. अगर आपको फॉरेन में फाइल करना है तो कन्वेंशन एंड पीसीटी ले सकते. तो ऑर्डिनरी यू कैन फाइल. सो इसमें दो क्लासेस है फिर से, 1 and 2 कैटेगरीज. सो इंस्टीट्यूट इज कमिंग अंडर फर्स्ट कैटेगरी. मैंने आपको बताया था 80% फी कंसेशन अभी आ गया है. सो इंडिविजुअल फाइल करिए, इन्वेंटर खुद कर सकता है, नेचुरल पर्सन मतलब 10 लोग भी मिलकर कर सकते हैं. तो एंड इंस्टीट्यूट. सो फाइलिंग फीस विल बी 1600 रुपए. तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए फीस जो है 1600 रुपए फाइलिंग फीस है. ठीक है, आइदर ही विल बी इंडियन और फॉरेन. और अदर्स के लिए अगर कंपनी के नाम से फाइल होता है तो 8000 रुपए. मैंने बताया था कि हमारे 4 ऑफिस है, अब जुरिडिक्शन वाइज होता है. सो बेस्ड ऑन अप्लीकेंट जुरिडिक्शन, if applicant is from Maharashtra, Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, you can file to Mumbai. If applicant is from South, you can file to Chennai. North, Haryana, Himachal, Punjab, Rajasthan, UP, Uttarakhand, Delhi, you can file to Delhi. Similarly to rest. These are the documents required for filing of patent application. This is very important. Last important slide. You can just see here. I will give this information. तो पेटेंट फाइल करने के लिए सिर्फ फॉर्म नंबर 1 चाहिए, फॉर्म नंबर 2 चाहिए एंड फॉर्म नंबर 3 चाहिए. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स विच आर मैंडेटरी टू फाइल. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वंस यू आर फाइलिंग प्रोविजनल, आप सब लोग प्रोविजनल पेटेंट ही फाइल करिए. अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, यू आर नॉट रेगुलरली फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, तो आप उसमें फॉर्म 2 में जो है प्रोविजनल फाइल करिए. प्रोविजनल यू कैन फाइल प्रोविजनल और कंप्लीट. अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो प्रोविजनली फाइल करिए. मैं इसको बताऊंगा आपको कंटेंट क्या होते हैं. बेसिकली फॉर्म 1 में क्या होता है, योर एप्लीकेंट नेम, एड्रेस, इन्वेंटर नेम, इन्वेंटर एड्रेस, टाइटल, उसका एप्लीकेंट का सिग्नेचर, ये होता है.
फॉर्म 3 में क्या होता है, फॉरेन फाइलिंग के डिटेल्स। अगर आपने फॉरेन फाइलिंग नहीं किया है तभी भी आपको उस पर नील देना है, नहीं किया करके। और ये फॉर्म 2 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। तो इसमें सबसे पहले प्रोविजनल आप फाइल करो और कंप्लीट 12 महीने के अंदर में फिर से ये डॉक्यूमेंट फाइल करिए। तो प्रोविजनल में क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग तो एक्सपर्ट है उसमें। जब आप पेपर लिखते हो तो क्या लिखते हो, उसी प्रकार के लिखना है। जैसे आप टाइटल लिखते हो कोई भी बारे में, बैकग्राउंड लिखते हो, प्रायर आर्ट, समरी लिखते हो आप, ठीक है। आप ड्राइंग्स के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हो और बाद में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन विद रेफरेंस टू ड्राइंग। तो वैसे टाइप का है पूरा यहाँ पे भी। देन एडवांटेज लिखना है, देन आपको क्लेम्स लिखना है कंप्लीट के टाइम पे, प्रोविजनल में। देन आपका एब्स्ट्रैक्ट आएगा, ड्राइंग्स आएंगे, ये आपका पूरा पेटेंट स्पेसिफिकेशन होगा। एटलीस्ट मेरा सजेशन है 15-20 पेटेंट देखना चाहिए आप लोगों ने, अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो। गूगल पेटेंट आपको पता है, या आईपी इंडिया का हमारा वेबसाइट है, या अमेरिकन पेटेंट है, या यूरोपियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट से, इसमें जाके आप देखिए 10-15 पेटेंट आपके रिलेटेड, देन यू कैन ड्राफ्ट योर पेटेंट स्पेसिफिकेशन। ये फॉर्म नंबर 1, 2, 3 आप फाइल कर दीजिए, प्रोविजनल आप फाइल कर दीजिए और 12 महीने के अंदर कंप्लीट फाइल करिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और फीस आपको एदर यू कैन फाइल ऑनलाइन, या आप डीडी भी बना सकते हो अगर आप पोस्ट से भेजना चाहते हो, ठीक है। पोस्ट से भेजना चाहते हो तो आपको डीडी कौन से नाम से बनाना है, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड पेटेंट ऑफिस जो भी होगा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, आपका एप्लीकेंट के जुरिडिक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्म्स 1, 2, 3। अभी 5 जब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो तो फाइल डालो, और 18 जो है आप 4 साल के अंदर में कभी भी कर सकते। ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसके बिना आपका फाइल एग्जामिन नहीं होगा। तो दीज आर ऑप्शनल, 4 साल में आप कभी भी कर सकते हो। आइदर यू कैन फाइल 18 और 18A। 18A जो होता है वो तत्काल एग्जामिनेशन है, ठीक है, और 18 है नॉर्मल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये हो गया। तो 18 आप कभी भी कर सकते हो 48 मंथ्स तक के अंदर में। एंड व्हाट इज दिस फॉर्म 28? दिस इज रिक्वायर्ड टू गेट फी कंसेशन एज ए इंस्टीट्यूट। 80% जो फी कंसेशन जो मिलता है ये फॉर्म 28 की वजह से ही मिलता है। सो नॉर्मली इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट, बट अगर इंस्टीट्यूट एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट इज इंस्टीट्यूट, तो ये फॉर्म 28 आपको फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या, आपका इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज हुआ होगा ना, रजिस्टर्ड हुआ होगा कहीं से, आपको जो गवर्नमेंट से मान्यता मिली होगी, उसका आपको जेरोक्स लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड। देन फॉर्म 9 इज ऑप्शनल फॉर्म। अगर नॉर्मली हमारा जो पेटेंट एप्लीकेशन है 18 मंथ्स के बाद पब्लिश होता है, पर आपको जल्दी पब्लिकेशन करवाना है तो यू कैन फाइल फॉर्म 9 एज अ अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट। देन पावर ऑफ अथॉरिटी, अगर आप किसी एजेंट के तरफ थ्रू करना चाहते हो, देन फॉर्म 26 कैन बी अप्लीकेबल, इट इज ऑप्शनल। तो जो नीचे के जो भी फॉर्म्स है वो सब ऑप्शनल फॉर्म्स है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी वेबसाइट है ipindia.gov.in। ये सभी फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यू कैन फाइल ऑनलाइन आल्सो। नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू सो दैट यू कैन गेट आंसर्स। 10 minutes we can discuss. Session is open for the question answer. Participants are requested to write down the question if they have any in the chat box, or you can unmute yourself and ask the question if you have any. Sir, I have only one question related to early examination and early publications. Hello? Sir, if we go for the early publication, then we paid extra money for that things. But if we go for the early examination, is there any fees? Yes, madam. Normal examination fees will be for form number 18 is 4,000 rupees for you as an institute also, as an applicant also. And for others, it will be 20,000. So 4,000 you have to file for
normal examination, that is your form number 18. Hmm. Okay. Now you want to file early examination. Yes, sir. Okay. So you can file form number 18A, Tatkal examination. Yes, yes. And, who can file? So everybody cannot file this Tatkal examination. There are some restrictions. So as a government institute can file, SME can file. SME means small industries, small scale industries, MSME. Then startups can file. Then government organization can file. If you file an international application, then you can file this form number 18A. One last option is remaining for you. Okay. So here, if all applicants are individual, what is written that in form 18A, if you see that form 18A, if all are individual applicants, individual means natural person. Okay. Institute is not natural person. All should be individuals. And one of the applicant is ladies. Yes. So you can file form number 18A, Tatkal examination you can file. Along with the fees, 8,000 rupees. Okay, sir. Okay. Okay. So other fees will be 60,000. Now So it is. for 60,000, you have to pay only 8,000 rupees. So instead of 4,000, normal examination fees will be 4,000. Yes. So instead of that, you can file 8,000 rupees and get everything Tatkal. But you are filing Tatkal, then you file form 9 also to get early publication. Yes, yes, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Participants are requested to write down the question if they have any in the chat box. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes. Madam, it is audible. सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी कुछ कि कितने फॉर्म्स भरने हैं, कैसी फॉर्मेलिटीज करनी है, फीस क्या है, जो आईपीआर के लिए जो डर होता है, ऐसा होता है कि ये कैसे होता होगा, वो बहुत आपने इजी करके हमें बताया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you. Am I audible, sir? I have a question. Sir, you are audible. Just you tell one question in chat box from Dr. Sanjay Guha, sir. It is asking question related to the copyright like that. So, Pariksa, please problem. ask this question. I'm waiting. I will be waiting. Pariksa, go ahead. I have just putting the question. Yes, sir. My question is, can a hardware associated with software, a system, can be patented, or should one go for individual design and copyrights for hardware as well as software? In this actually see section 3K, you can see the section 3K of the Patent Act. Okay. As such, computer programs per se is not patentable. Okay. Computer program per se is not patentable. But for that you write our see our CRI guidelines, computer related invention guidelines.
so which is published in our website. So as such, computer programs are not patentable, but computer program with some hardware components are there, which are interfacing with each other, and you are properly writing that writing the claims part. So how to write that claim part, it is again very important. So how that interface is working with that hardware device, if you properly satisfied and reply in that claim part, then it can be matter of patent. Okay, sir. And if it is just for hardware, then only design can be registered. No, I'm hardware not- can be patentable, no problem. Hardware can be patentable, no issue. If it is not known. Basically, what I'm trying to say is some circuitry. Okay, the circuit designs are basically compilation. Means a unique compilation can be there, but nothing is starting from zero. Means we are not having our own design chips or so. So under that SICLD, we have different office for that. SICLD, Semiconductor and Integrated Circuit Layout Design Registry. So which is Okay. at Delhi office. So you can file online circuit diagram in that registry, no issue. Okay, sir. Do the That's procedure for that also in my that 28-page material. It is already there. I will circulate it. Sure. Thank you. Thank you very much, sir. Those who are coordinating this event, I will share with them, and definitely I will request them to circulate. It will be great, sir. Sir, there is a question in chat box from Pankaj Solanki. Can we file patent for modified synthesis techniques in material science? Madam, is it an improvement or just modified? Modified. Is it an improvement or just modification? If No, sir, improvements it is are there, improvement. if improvements are there, we have to see that actually how much improvements are there and what kind of synthesis technique it is has been used. Accordingly, if it is satisfying the condition of novelty inventive step, definitely we can go ahead. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, there is a question from Anubhav K. In case of patent infringement, what are we supposed to do? Can you please speak loudly? Okay, sir. In case of patent infringement, what are we supposed to do? Yes. See, patent infringements, once you file a patent application, okay, and it is better to file immediate publication, early publication request. Why I'm telling you, once it is published, patent is published, from the date of publication, your infringement proceeding can be, you can start your infringement proceedings. But you can start your infringement proceeding only after the grant of patent. That right is not with you. See, you have just filed the patent application. We are not granted patent. Once the patent is granted, you can take action against anybody. Okay? So infringement action can be taken against anybody in any court of law after the grant of patent. But the damages you will get from the date of publication. That's why we requested many offices, many applicants to publish application as early as possible by filing Form 9 also. Are it clear? Yes, sir. Which court will hold a jurisdiction? Normal code. Normal code you can, as per the where it is infringing. Sir, there is a question. You have mentioned that the agriculture products like methods for cultivation of mushroom are non-patentable. So, sir, could you please explain why it is so?
Madam, agriculture method is not patentable. Agriculture is not patentable. Any methods of our horticulture or agriculture are not patentable. So, which is written in, madam, in patent law. So, we cannot challenge the law. Actually, law is written by the Parliament of India. So, actually, it is why I am giving answer. To save our agriculture industry, that patent is not giving. We are not granting software patent also to save our software industry. Otherwise, what will happen? Everybody will take the patent on that and our agriculture people will suffer. New method for agriculture farming. There are a lot of methods are there in foreign patents are there. So our industry will suffer. That's why these laws are very stringent in our India. Is it okay, madam? Okay. Now I would like to invite Krishna Parikh sir, Vice President IIC, to give vote of thanks. Sir, unmute yourself. Sir, unmute yourself. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So at the onset, I would like to convey my sincere thanks to Dr. Pankaj Borkar, sir, Deputy Director of the Patent Office. Sir has explained well almost all details about filing the patent, designs, and has gone to the level, another level of explanation. I personally feel that it is much helpful to me, and so should be to everyone who has joined the session. So, from my personal behalf, as well as from the Saurashtra University Incubation Center and SSIP unit, I convey our thanks to Dr. Pankaj sir. Heartfelt thank to you. Also, I would convey my thanks to our Honorable Vice Chancellor sir for permitting us to arrange such an event, and he has always supported us in all such events. Unfortunately, he could not be available here, but he has conveyed his wishes for the success of the event. Also, I convey my thanks to Dr. Ranjan Kunt, coordinator and president of SSIP and IIC. Also, I convey my thanks to Parth and other means faculties of SSIP cell who have taken enough hard pain for making this event successful. At the end, all the participants for their patient listening and enthusiastic participation in the event. Your questions were worthy and the answers have satisfied your queries. So I thank all of you, and with that I surrender myself. So thank you all for making this session more wonderful and helpful to everyone. Thank you all. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. It was very good, informative session. Student learns a lot about various type of intellectual property for patents, design, copyrights, trademark, how to file it, various processes and support provided by the IP offices for the creation and filing of the patent. We are again thankful to you for being eminent speaker for IT management and startup. Thank you, sir, for sharing your experience and expertise on intellectual property rights and IP management for startup. Thank you all. We are ending this meeting here. Thank you, Anjali. Yes. Yes, Parikh, sir. Nothing, ma'am. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.